Hello everyone, welcome to Nocha. Today we'll start with chapter 12, which is environmental management and land use pattern. This is actually a very short chapter, and the questions that are formed from this chapter are also very easy. So let us start. Now, what is an environment? The definition is given here. I'm just explaining it to you. Environment is basically the surrounding, our surrounding. We all are surrounded by something or other, right? So environment basically refers to the sum total of conditions, the conditions that surround us and at a given space and time. Okay. It also includes biotic and abiotic substances. Biotic means plants and abiotic means that are not related to plants. And environment is also the totality of physical, social, and biological factors. Okay, now we will consider whenever we talk about environment, we consider about the biological, the social, the people that surround us, the kind of people we're surrounded with, and the physical beings that surround us essentially. Okay, it also comprises of natural and man-made surroundings. So this surrounding can be either natural like biotic and abiotic means which is not related to some plants or which is not related to anything any vegetation. Okay. So it can be either natural as well as man-made. It does not matter as long as it fulfills this physical, social and biological factors. Okay. This definition you have to prepare, and it is actually a French word. It is derived from a French word which is environner, which means to surround. Now, development, on the other hand, implies overall improvement in economic, social, and political conditions of a society. So, what is development? Development is basically like हम हमारे यहाँ पे अगर इंडिया के रेफरेंस में अगर बात करें, actually development is same for every region. तो if I ask you कि development क्या है, तो how would you plan a development in the society? तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि इकोनॉमिकली आई वुड वांट कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, सोशली आई वुड वांट कि सब एक फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट रिसीव करे, एंड पॉलिटिकली आई वुड वांट कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हो वो करप्टेड ना हो और वो देश को अच्छे से संभलाए, राइट? तो तो development is basically the improvement, overall improvement. We are not just talking about economical improvement, we are not just talking about social improvement, we are talking about the overall improvement in economic, social and political conditions of a society. This definition is, I think, very easy, and आपको याद रखने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. So development करने के लिए we need natural resources, right? Often man indulges in thoughtless and indiscriminate use of natural resources. Now see, क्यों चाहिए डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज क्यों चाहिए? नाउ सपोज फॉसिल फ्यूल्स और सपोज मिनरल्स, वी ऑल आर अवेयर कि मिनरल्स से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. जो खुदाई करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जिनका बिजनेस है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है. ओवरऑल अ मिनरल क्रिएट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड or fulfill the work of providing unemployment, right? Sorry, employment, right? So we directly or indirectly need natural resources. We absolutely need natural resources for our improvement. And so now imagine if we use them indiscriminately, if we use them in a way that would exploit it rather than develop our nation, फिर क्या होगा? फिर it would hinder our development. ओके. सो बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि लोग अपने पर्सनल गेन के लिए ये नहीं सोचते कि डेवलपमेंट का क्या होगा या फिर सोसाइटी का क्या होगा उसमें. तो वो लोग अपने पर्सनल गेन के लिए थॉटलेसली और इनडिस्क्रिमिनेटली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जिनसे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत हद तक हिंडर होती है. This process results in overall degradation of the environment and calls for immediate steps to be taken for environmental management. अभी अब अगर डिग्रेडेशन करोगे इतना ज़्यादा तो environmental management के लिए भी तो steps चाहिए, right? तो ये steps के बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे, and this is the basic summary of the chapter basically. By definition, environmental management
is a process of planning, review, assessment, decision making, and like which is essential in the real life situation of limited resources and changing priorities. Now, suppose अभी क्या होता है, like I have just told what environmental management is. अगर discriminatory करके या फिर indiscriminate way में अगर natural resources को exploit किया जाए for a very long period of time, then there would come a day when there would be no natural resource available to us. फिर क्या होगा? This is very concerning and this is very alarming as well. इसीलिए इन्वायरमेंट मैनेज का कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है कि ये एक प्रोसीड्योर है जिससे लोग प्लान कर सके, रिव्यू कर सके, असेस कर सके और डिसीजंस बना सके, जिससे क्या होगा रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड, और जिससे क्या होगा लाइक जिसका मेन पर्पस यही है कि लिमिटेड रिसोर्स को हम अच्छी तरीके से फुलफिल कर सके, यूज कर सके. ओके, टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेटरी use of natural resources. Thus, a new dimension of conservation and management of environment has been added to the overall concept of development. तो अभी development में with all these 3 points, okay, so जो development का जो definition था वो previously that said that it implies overall improvement in economic, social and political conditions of the society. इस definition में कहीं पर भी environmental management का कोई भी concept नहीं था previously. अभी recently a new dimension of conservation and management of environment has been added to the overall concept of development. तो अभी जब हम डेवलपमेंट को परसीव करते हैं तो हम इसी तरीके से परसीव करते हैं उसे कि इट नॉट जस्ट सॉल्व्स द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, बट इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, which includes our natural resources and our trees and our forestry and everything. Okay. So ये part उतना important नहीं है. This just says कि developing countries like India needs this environmental management thing more than any other countries, and this is also developing in India slowly. Okay, there's a question here. What measures of the environmental management have been adopted in developing countries? This question is important because here are some solutions given. See, new innovations. आपको पूछा जा सकता है कि क्या क्या new innovations हमारी country like developing countries like India में introduced हो रहे हैं by the government or by the societies which would help in environmental management. The answer is this line: new innovations such as clean technologies, environmental auditing, eco-friendly products, etc. So we all know this, I think. क्लीन टेक्नोलॉजीज मीन्स फार्मिंग का जो टेक्नोलॉजीज है उनको इम्प्रूव करना, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग करना एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना, प्लास्टिक्स को अवॉइड करना एक्सेट्रा. तो दीज आर द पॉइंट्स हैव बीन developed to save our environment from pollution and degradation. The concept of environmental management has also emerged as an indispensable tool for sustainable development. Now, what is sustainable development? This definition is also very important. Sustainable development may be defined in a variety of phases, but for the most widely adapted definition is found in our common future. This is not the definition, okay guys, this is not a definition. This is the definition. The line that is given in italics is the definition, and this is the definition you have to write in your exam. Sustainable development is the development that meets the needs of our present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Now, we all talk about saving water, right? हम क्यों बात कर रहे हैं वाटर सेव करने के लिए? Because in the very near future, if we keep on exploiting the water resources and natural resources the earth has given us, mother nature has given us, there would come a point जबकि future में, in the near future, there would be no water left. Okay, there would be absolutely no water left and natural resource का एक shortage हो जाएगा जो कि deal करने में तब बहुत मुश्किल हो सकती है if we don't adopt this sustainable development. This is the development जो हम adopt करते हैं to meet the needs of our society, to meet the needs of our present. जो present में जो ज़रूरत है उनको पूरी करने के लिए we do this sustainable development, but there is this one condition कि without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. हम यूज़ तो करेंगे natural resource को, of course यूज़ करेंगे, वो होते ही है यूज़ करने के लिए, but not in a way that would exploit them and not in a way जिससे future generation को कोई तकलीफ हो. Okay. This is basically the mindful usage of natural resources. So thus, management implies a conscious choice from variety of alternative proposals such as choice
involves purposeful commitment to recognize and desired objectives. Management implies to the adoption of a strategy, a number of strategies designed to meet realistically the short term objectives, yet specifically providing sufficient flexibility for a presumption of longer term options. ठीक है, तो ये उतना important नहीं है. This part is very important. Following are the major important aspects of the environmental management. You have to learn just 6. Here's this question: what are the important aspects of environmental management? Now, these 2 points are same. Okay, I'm reading the points out for you, but before I read it, just remember that you have to learn 6, and these 2 points are the same. First point is to create a pollution free environment, and second point is to protect men and animals from pollution. These 2 points are exactly the same. So अगर आपको suppose आपने 6 points लिखे हैं यहाँ पे, and you include these 2, this will be counted as 1. Okay, so आपको यहाँ पे 2 marks allot करने की जगह आपको 1 mark allot किया जाएगा, because these 2 points are exactly the same. Now, number 3, to protect biodiversity of the world. Number 4, to establish coordination between government and non-government organization in protecting the environment. To analyze the impact of development plans on environment. To help in formulation of national and regional environmental policies. To monitor the organizing plans for the quality of environment. To sponsor awareness programs to educate people at all levels. To develop long-term and short-term plans for conservation of environment. To examine the efforts made under the environment management and results, and to fix responsibility for non-implementation. This point basically means कि ये देखा जाए कि सब कुछ ठीक से मैनेज हो रहा है कि नहीं, एंड इफ देयर इज नॉन इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो जो मतलब उसके चार्ज में होगा इम्प्लीमेंटेशन का, तो उसको भी ही और शी would be responsible for the non-implementation. Okay, if there is any non-implementation, he would or she would be held accountable, would be held responsible for the non-implementation. मतलब एक strictness से इसको फॉरवर्डली एक स्ट्रिक्टनेस से इसको किया जाए, राइट. To encourage research in various fields of environment, to suggest guidelines to the government for improvement of the quality of environment. So any 6 points you can learn, any 6 points you can prepare from here. I'm moving on to the next part. Okay, I'm coming to this land use pattern. Okay, so knowledge of land use is essential for us to know the economic condition of the country. Why? Why do you think कि यहाँ पे it basically says कि हमारे देश का जो लैंड है वो किस कदर से यूज हो रहा है देश में, that tells us the economic condition of a country. Why do you think so? So let me tell you the reason. Basically, see, suppose the land we have, the majority of the land we have in our country is used for agriculture, we would get to know कि जो हमारे यहाँ पे जो employment हो रही है, that is dependent on primary activities. Primary activities basically means agriculture, animal husbandry, farming. So that is mostly done in the rural areas. Okay, so now suppose that our land is mostly used for industrialization. Mostly जो industries होता है जैसे कि USA, suppose that is mostly covered, the most common employment of that area is industrialization. So that way we would know कि जो इकोनॉमी है वहाँ पे उसमें एम्प्लॉयमेंट टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा है, ओके, एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंड किस तरह से यूज़ हो रहा है, लैंड का किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है एक कंट्री में, वो उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत हद तक बताता है. ओके, द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन density of population, sorry, I just missed a line, topography, soil and climate, density of population, duration of occupation of the area, land tenure and technical levels. These are the factors जिसमें एक यूटिलाइजेशन, एक लैंड किस तरह से यूटिलाइज होगा वो डिपेंड करता है. लाइक टोपोग्राफी, वी ऑल नो कि एरिया का टोपोग्राफी कैसा है. सॉइल एंड क्लाइमेट, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि सपोज अगर किसी एरिया का सॉइल बहुत अच्छा हो या फिर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा रेन हो रहा हो, तो वी नो ऑटोमेटिकली कि वो एरिया दैट वुड बी रिच इन एग्रीकल्चर. ओके, सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि कहाँ पे लोग ज़्यादा हो, ड्यूरेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ दैट एरिया, किस
मतलब कितनी देर तक वहाँ पे ऑक्यूपेशंस रहती है लोगों की, लैंड टेन्योर एंड टेक्निकल लेवल्स, लाइक वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा लाइक एडुकेटेड लोग होते हैं या फिर जो कि जिनको ज़्यादा एडुकेटेड नहीं होते हैं तो वो लोग रहते हैं, तो कैसे टेक्निकली जो लोग हैं उनका क्या टेक्निक होता है वो भी बहुत मैटर करता है. ओके, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. नाउ व्हाट इज नेट जोन एरिया? So land area is basically, sorry, so net zone area is basically the land area that is used for cultivation and where crops are sown at least once in a year. Okay, मतलब जो area that is agriculturally active once a year, मतलब यही होता है कि at least once a year, मतलब like साल में एक बार भी हो फिर भी वहाँ पे कल्टीवेशन होता है. एंड इट इज़ अ वेरी एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया जो कि यूज़ किया जाता है फॉर सोइंग ऑफ क्रॉप्स विच ऑल्सो इंक्लूड्स ऑर्चर्ड्स बाय द वे. ओके, यहाँ पे एक बेसिकली एक डायग्राम गिवन है, उतना वो ज़रूरत नहीं है. दिस इज एरेबल लैंड, फॉरेस्ट एंड स्क्रब, वेस्ट लैंड. आई एम कमिंग बैक टू नेट जोन एरिया. So what is the significance of net zone area? Net zone area has a special significance in an agricultural country like India because agricultural production largely depends upon this type of land. तो अभी अभी सपोज सिंस लाइक वी ऑल नो कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर का जो परसेंटेज है दैट इज वेरी मोर देन द टर्शियरी सेक्टर परसेंटेज. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो रूरल एरियाज में होता है एंड वो एग्रीकल्चर ही होता है. मतलब वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत डिपेंडेंट होता है इवन इफ इट इज़ नॉट फार्मिंग और समथिंग. तो वी गेट टू नो कि जो नेट जोन एरिया है दैट टेल्स अस कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कितना, मतलब कितने टाइप, कितने लैंड तक वो हो रहा है. लाइक जो मेन जो ऑक्यूपेशन है लोगों का वो कितना लैंड ऑक्यूपाई करके वो कर रहे हैं. ओके, देयर इज एन अर्जेंट, we are coming to our next page. There is an urgent need to increase the net area zone for meeting the food and other requirements of rapidly increasing population of India. Now we all know कि population is such a big problem in a country like India. तो यहाँ पे क्या होता है, since so many people are there in India, there is a scarcity of resources. Resource पे एक अपने आप ही एक दबाव पड़ जाता है to feed its own nation, to feed the people. इसलिए employment इतना मुश्किल हो चुका है in a country like India because of this whole population thing. So in order to meet the food and other requirements, we need this net zone area. Okay, we need to increase this net zone area. मतलब एक ही होता है कि we need to increase cultivation, and cultivation is only possible if we have this net zone area. Although there is not much scope for increasing area under this category due to natural limitations such as topography, soils, and climate. So even though there's this dire need to increase this area, it is naturally very limited. Now we have a very limited space, right? तो अगर एक सपोज एक अगर जो कल्टीवेशन के लिए जो फील्ड या फिर जो एरिया यूज किया जाता था सपोज वो वेस्ट लैंड बन जाता है किसी तरीके से, तो वी कैन नॉट रीगेन इट बैक, राइट? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीगेन दैट. तो कहाँ से लाए लैंड, राइट? तो नेचुरली वी आर वेरी लिमिटेड बिकॉज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, ये जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्रीकल्चर के लिए वो हर जगह पे कन्वीनियंटली नहीं मिलते हैं हमको. दिस होल डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, so I'm just skipping this part.